Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn with Hash. So today we are going to take another topic which is the inequality with logarithm. So it will be like continuous of previous videos what we were selling in inequalities. First we saw basic inequality, then we saw inequality with modulus, and now we are seeing inequality with logarithm. So if I talk about the inequality with logarithm, then there is only one rule in this. One rule that will define the entire logarithm inequality. We'll see that. Before moving to the rule, let's see how the graph of a mod look like, a graph of a log look like. So let's say we have given y is equal to log of x where the base is b. So we have two possibilities here. If my base is greater than 1, if my base lies between 0 and 1. So if my base is greater than 1, then the graph of log looks something like this. And if my base is between 0 and 1, then graph of log looks something like this. So this one will be 1 comma 0, this one will be 1 comma 0. So this will be 0 0 and this will be 0 0. Okay, let's see what we can derive from this rule. So let's say if my b is greater than 1 and if my x is also greater than 1, means I'm talking about this interval. If my x is greater than 1, then I am getting log values as this, which is in positive y. So I am getting positive value of log if my x is also greater than 1 and base is also greater than 1. So if my x is greater than 1 and base greater than 1, I will get log as positive. Similarly, if my base is greater than 1 and if I take value between 0 to 1, I'm talking about this interval, then it's going to be my negative logarithm. So if my x lies between 0 and 1, I will get log as negative. The reverse thing goes to here. If the base is between 0 and 1, if my x values lies between 0 to 1, then I am going to have positive logarithm. So if x is between 0 to 1, then I will have positive logarithm, and if my numbers is beyond 1, then I will have this negative logarithm. So what do we conclude? So we conclude here that if my x and base are on the same side of unity, be it this side or this side, then we will have positive logarithm. If they are on different sign, then we will have negative logarithm. So if my base, let's say my base is between 0 and 1 and my x is bit greater than 1, then I will have negative logarithm. Similarly, if my base is here and my x is here, then also negative logarithm. If they both lie on the same thing, then we will have positive logarithm. Let's put it on a point. That is the only rule in this. If base and number are on same side of unity, means 1, then we have positive logarithm value, else it will be negative. This is the only rule which we have to follow while solving inequalities problem in logs. Let's try it out. Let's try it out with a very basic simple example. Let's say we have given log of 7 2x minus 6 upon 2x minus 1 greater than 0. So here I can see the base is 7, which is obviously more than 1. So this, and I'm being asked this has to be greater than 0, means
this and this value should lie on the same side of unity, means it is greater than 1, then this should also be greater than 1, then only the value of the log will become positive. So I will have to solve this inequality as like this. Let's solve it. So let me bring -1 to this side and it will be greater than 0. If I solve it, it will become like -5 2x minus 1 greater than 0. It will be 5 2x minus 1 less than 0. So let's plot it on number line. So it will be 1 by 2. This will be positive, this will be negative. Okay, so my answer, which requires -1, so it will be minus infinity to 1 by 2. This is going to be my answer. Let's take another example. अगर यहाँ तक कुछ समझ में आ गया हो तो फील फ्री टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट. अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. लेट्स से अनदर एग्जाम्पल. लेट्स टेक log of 3 minus 4x का mod greater than 2. तो एक ही रूल ध्यान रखना है कि अपने ग्रेटर देन और लेस देन 0 करना है. अगर वो कर लिए तो बेस्ड ऑन दिस बेस वैल्यू एंड नंबर वैल्यू आई कैन सी कि वो लोग सेम साइड ऑफ यूनिटी है या डिफरेंट साइड ऑफ 1 है. सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस इनटू सिमिलर टर्म्स. लेट्स से 3 minus 4x का मॉड ग्रेटर देन, मैं इसको लिख देता हूँ log 3 का स्क्वायर. log 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे log 3 है. मैं इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा तो मेरे को log 3 को लेने में आराम होगा, सो डैट आई कैन मेक द राइट हैंड साइड 0. अगर मैं इसको यहाँ ले आया, लेफ्ट साइड ले आया, सो इट विल बी mod minus log 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0. अब मैं क्या, तो log का बेसिक प्रॉपर्टी है log a minus b, देन इट विल बी log a by b. सो 3 minus 4x का mod अपॉन 9 ग्रेटर देन 0. अब मेरा ये कंडीशन बन गया विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0. तो मैं वो रूल अप्लाई कर सकता हूँ. मीन्स हेयर 3 मतलब 1 से बड़ा है, सो दिस नंबर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1. देन ओनली आई कैन से कि नंबर्स विल फॉल ऑन द सेम साइड ऑफ 1, सो द लॉग विल बी पॉजिटिव. सो नाउ दिस क्वेश्चन विल रिड्यूस टू सॉल्विंग 3 minus 4x का मॉड अपॉन 9 ग्रेटर देन 1. So it will be 3 minus 4x का mod greater than 9. Now, अब what we discussed in previous video, so it will be like if you are solving this equation, then it is equivalent to solving 3 minus 4x greater than 9 or 3 minus 4x less than minus 9. So when we put out mod, we will have to solve this two equation and the union of both will be my answer. सो मैं देखता हूँ अगर तो -6 ग्रेटर देन 4x x लेस देन -3/2. इफ आई सॉल्व इट, इट विल बी 12 minus 4x x ग्रेटर देन 3. ओके, सो ये बोल रहा है -3/2 के पीछे हो, ये बोल रहा है 3 के बाद में हो. ओके, so we will have the solution as -3/2 union 3 to infinity. ठीक है. Now let's take another problem. So let's take log 1/3 2 minus 3x upon x greater than equal to -1. ओके, तो यहाँ पे -1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कोई कुछ भी रहे. फर्स्ट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो लॉग का 1/3 का समथिंग बेस का कुछ रहे, सो डैट मैं लेफ्ट में ले आऊँ और उसके बाद मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 करके मैं कुछ कर पाऊँ. सो मेरा ट्राई वही रहेगा log 1/3
minus 3x अपॉन x. सिंस लेफ्ट साइड में log का बेस 1/3 है, सो राइट साइड में भी मेरे को log का बेस 1/3 लेना पड़ेगा. देन क्या करना है, 1 के लिए तो 1/3 रखना पड़ेगा, लेकिन -1 है तो पावर -1. So if I take it, it will be 2 minus 3x upon x greater than equal to log 1/3. ये हमारा 3 बन गया. दोनों को एक साइड ले आते हैं. Then let's see. 1/3 2 minus 3x upon x minus log 1/3 3 greater than or equal to 0. Okay. नाउ log a माइनस बी हो जाएगा, तो इट विल बी log a बाई बी. तो 1/3 2 minus 3x अपॉन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, नाउ ये मेरा ये कंडीशन तो आ गया. नाउ वी कैन सी कि 1/3 जो है, 1/3 का वैल्यू है विच इज लेफ्ट ऑफ 1. सो ये वाला वैल्यू भी लेफ्ट ऑफ 1 होना चाहिए. देन ओनली इट विल सेटिस्फाई माई इक्वेशन. सो to become this as positive, both number has to lie on the same side of unity. Means 2 minus 3x upon 3x must lie between 1 and 0. ये 0 से बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव log it never defined. So both side of unity means 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो जाके ये 1/3 के सेम साइड में होगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. Now it will be like solving both equation at a time. So it will be like 2 minus 3x upon 3x less than equal to 1. ठीक. So it will be 2 minus 3x upon 3x minus 1 less than equal to 0. इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आई विल बिकम 2 minus 6x upon 3x लेस दैन इक्वल टू 0. और सिमिलरली मैं वो सेकेंड वाला को सॉल्व करूँ तो -3x अपॉन 3x ग्रेटर देन 0. ओके, तो सिंपल हो गया. सो लेट्स प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन. अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ सो आई विल गेट इट 0, आई विल गेट इट 1 अपॉन 3. ओके, इफ आई पुट एनी नंबर ग्रेटर देन 1/3 it will get negative number. So this will be negative, this will be positive, this will be negative. Okay, let's put यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक आ गया 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 2/3 आ गया. whatever I'll put here it will become as negative हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, चलो. तो इंटरवल में देखता हूँ तो यहाँ पे मिल रहा है लेस देन 0, राइट. सो यहाँ पे मिल रहा है मेरे को -∞ to 0 union 1,3 to infinity. 1,3 can be closed because ये equal to 0 है. और यहाँ पे मैं इंटरवल देखता हूँ तो इट विल बी 0,2/3. ओके, मेरे को दोनों रिजल्ट को कंबाइन करना है बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सॉल्व. आई सेपरेटेड them into 1 and then 2 and then the intersection of both the solution will be my final answer. So let's plot it. This okay. अब क्या हो गया, इसका सबका ले लेना है. तो 0 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, 1/3 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और 2/3 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ. ऑब्वियसली इन्फिनिटी -∞ तो है ही. ठीक है, ओके. तो -∞ to 0, ठीक है, -∞ to 0 ये आ गया. देन 1 to infinity, 1/3 to infinity. सो 1/3 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये आ गया. इसका मैं देखता हूँ तो 0 to 2/3, 0 यहाँ है, ओके, 2/3 दोनों एक्सक्लूडेड. ठीक है, अब देखना है कि दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा. तो भाई है 1 2 3 4. ठीक है, इन दोनों में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. इन दोनों में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. इन दोनों में यस, ये लाइन कॉमन आ रहा है. इन दोनों में नहीं, ये 2/3 तक ही है. ये 2/3 तक है. यहाँ तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है लेकिन इन दोनों कॉमन नहीं आ रहा है. ओके, सो माय फाइनल आंसर विल बी 1/3, 2, 3. 1/3 will be included
okay, 2/3 will be open. So this will be my answer to this question. Now इसमें अब क्या हो जाएगा कि सपोज इन दिस आई हैव टेकन अ कांस्टेंट बेस लाइक 1/3. मैंने यहाँ पे बेस ना फिक्स कर दिया, आई हैव नॉट मेड दैट इनटू ट्विस्ट. और ये भी अगर कांस्टेंट हो जाए तब तो और भी सिंपल हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स में इसमें ही अगर मैं कुछ ट्विस्ट कर दूं, लेट्स से मैं बेस को ही चेंज कर दूं, log 2x हो जाएगा. यहाँ पे सेम थिंग मैं रख दूं, अगर 2x - 3 2 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर इक्वल टू 2. तो कैसे सॉल्व करेंगे? देन इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग टू सी. विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो कि हाउ वी कैन गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पर कि ये भी वेरिएबल हो, ये भी वेरिएबल हो, तब हाउ वी कैन मेक इट सॉल्विंग. सो विल सी दैट. टिल देन, थैंक यू.